Thank you, everybody. So, credit officer, today we are going to discuss about the syllabus and everything, syllabus and sample MCQ in professional banking, because professional banking not is not everyone's cup of tea. ठीक है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन करिए. Okay, these are this talking point or the syllabus of credit management. Any credit officer, credit manager exam, these are the topics from where questions are being framed. Principles of lending, very important. Principles of lending. Okay, yes. Then comes types of credit facilities, credit rating, analysis of financial statements, the PNL and the balance sheet, working capital assessment, because this is what you are going to do as a credit officer once you are posted or once you are recruited. NF based facility, that means the LCBG, non fund based facilities, export finance, NPA management and IRAC norms, credit risk and credit derivatives, signification of the documentation, needs and the essential features of documentation, term loan appraisal. These are the topics or talking subjects from where your questions are being framed. Again, constitution or types of borrowers like private limited, individual borrowers, MSME, etc. Public limited, credit facilities, various types of credit facility, facility wise and product wise documentation, essentials of mortgages and sourcei, types of charges, resolution framework, PSL and government sponsored schemes, all types of credit guarantee scheme including CGTMSE, NCGTC, etc. DRI loans, differential rate of interest loans, and government sponsored schemes related to credit. IBA norms on education loan, management of impaired asset. Again, it is part of IRAC. I have mentioned it in various ways. On lending norms, new to the credit. Okay, ratio analysis, cash flow, sources of finance, MSME, agri, credit monitoring, project finance, credit rating, pre-shipment finance, pre-shipment credit in foreign currency, PSFC, RAF, running account facility, retail loan versus corporate loans, lok adalats, debt recovery tribunal, SURFACI, write-off, IBC and CDR. Okay, corporate debt restructuring. Again, types of mortgage, इसको हमने सेगमेंट वाइज बनाया है. टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, टाइप्स ऑफ चार्जेस, गाइडलाइंस ऑन सरसीआई रजिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ डिक्री, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, सिबिल, फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर डेट कलेक्शन, लॉज रिलेटेड टू बिल फाइनेंस, डिफर्ड पेमेंट गारंटी, लॉ ऑफ लिमिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वन और टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. कंपनीज एक्ट, अगेन वन और टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट. Then again, as you are going to be recruited as a scale 1 officer, here some of the questions will be from general banking like AML, KYC, very much related to credit. Without KYC you cannot do a credit facility. So AML, KYC, few master circulars related to credit like the home loan, LTV of home loan decided by the RBI's master circular in the month of February 2022. This is how our knowledge students रिमेन एम्पावर्ड. ठीक है, एलटीवी रेशियो में चेंजेस किया गया था होम लोन में 2 साल के लिए. ठीक, उसके बाद जो मास्टर सर्कुलर रिलीज हुआ है वो इंपॉर्टेंट है. तो आरबीआई से रिसेंट अमेंडमेंट्स, बैंकिंग रेगुलेशंस, रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट, banker customer relationship, some important points from negotiable instruments, government sponsored schemes, legal banking and important acts. This much you need to prepare or this much you need to practice. But if you are worried after looking into a vast syllabus of credit management, because credit management is an integral part of banking and almost treated a cot above the liabilities. ठीक है, लाइबिलिटीज तो कोई भी कलेक्शन कर लेगा, हर किसी को जरूरत है बैंक में अपना पैसा जमा करना. बट गिविंग ए लोन और द सर्विस ऑफ लोनिंग is an act, is an art. Okay, because as a credit manager you have to take a decision so that your money or the public money remains safe in the hands of the borrower. ठीक है, क्योंकि वो पैसे को वापस भी लाना आप ही का जिम्मेदारी है और ये आपका पैसा नहीं है जो आप बांट के फिरेंगे, ये पब्लिक मनी है. And as a banker it is your duty to safeguard the public money and at the same time you have to generate the profitability for the bank. ठीक है, let's go to the questions. First question on your screens. Okay,
supposed to blank these screens. Okay, anyway, I will hide them. Yes, mortgage is defined under which act? Tell me. Transfer of Properties Act. Mortgage is defined under, first question I have shown you, but rest of the questions you have to answer yourself. Okay, so I will on the charts for you. Yes, yeah, so you can answer here. Mortgage is defined under which of the following act? It's Transfer of Properties Act. When the goods are in the godown and the borrower hands over the key to the godown to the bank, it is called an actual pledge, constructive pledge, symbolic pledge, or it is not at all a pledge. Tell me the right answer. Those who know, please tell me the right answer. When the goods are in godown and the borrower hands over, okay, we get Sadhana Chauhan says C as the right answer from LinkedIn. Okay, we get Mina Taylor saying A from YouTube. A as the right answer. Yes, thank you. Thank you. It is the actual place. A is the right answer. Okay, Smita saying C. No, it's A as the right answer. Okay, you are getting it. Next question on your screens. The right of set off is customer's right, banker's right, banker's obligation, or banker's discretion. Tell me. The right of set off is customer's right, banker's obligation, banker's discretion. This is how Knowledgist is different. We will give you the exact exam level questions. And remember, whenever you are enrolling, be cautious. The non-bankers cannot teach you banking. Remember it. And only platform Knowledgist is the only platform in India factually. Yes, it's D is the right answer. We show you it's banker's discretion. And yes, I was telling Knowledgist is the only platform in India which is dedicated on professional banking research. Others are mixed. They have PO, they have clerk, they have these exams also. But we are the specialist. LTV in case of home loan up to rupees 30 lakh will be considered as what percentage for all loans under the co-lending arrangement? And let me tell you the catch. Be it co-lending or not, the LTV ratio is defined by the RBI's master circular. And every bank has to abide by this. तो LTV ratio है वो आरबीआई के होम फाइनेंस के मास्टर सर्कुलर 2022 फरवरी महीने के मास्टर सर्कुलर में आप देखने को पाएंगे एंड दैट अलाउज दैट रिमेन्स टिल नाउ. ओके, लास्ट LTV related or home finance related master circular is released by RBI in February 2022 and that follows. ठीक है, इसमें जो LTV है वो है 90%, मगर उसमें कैच है, उसमें भी कैच है. I will be telling you. This is the LTV and risk weight in home loan. You know risk weight. To understand the risk weight, you have to go to the Basel norms class. You have to in application. You have to study Basel norms, and these Basel norms are important for every exam, be it risk, be it credit, be it generalist officer. It is very basic of banking. Okay, without Basel, banks will fail, right? So risk weight means if you give 100 rupees as a loan in some in any asset, a certain percentage of the same you have to keep aside, so that in case of the bank's failure or in case of high demand or high run out or sorry high outage of funds, you will be able to survive. Okay, तो अगर बहुत ज्यादा आपके जो क्रेडिट सॉरी जो विड्रॉल्स हैं या फिर जो आपके आउटफ्लोज हैं अगर अचानक से बढ़ भी जाएं, फिर भी आपके पास उतना पैसा रहेगा. अगर आपके सारे कस्टमर डिफॉल्ट भी कर दें, फिर भी आप सरवाइव कर पाओगे. दैट इज रिस्क वेट. ओके, तो अप टू 3 lakhs the risk the LTV is maximum 90%. This is what I was asking in the previous question. Please understand. But if it is 80%, the risk weight is only 35%. For every 1 lakh loan, 35,000 you have to keep aside. ठीक है, मगर अगर आप 90% LTV में किसी को लोन दे रहे हैं तो उसमें आपको 50%, क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा है. 90% दे दिया आपने, मतलब कस्टमर ने सिर्फ 10% अपने हाथ से लगाया है. अगर सिर्फ 10% उसने अपने हाथ, व्हाट इज LTV? लोन टू वैल्यू रेशियो.
Why LTV? Many of you may be new to the credit officer course or credit related segment, so please understand what is LTV, loan to वैल्यू रेशियो। अगर किसी का जरूरत 100 रुपया है, बैंक उसको पूरा 100 रुपए का लोन नहीं, वो कुछ अपने हाथ से लगाएगा और कुछ बैंक लोन, दैट इज एलटीवी। उससे क्या होता है, बैंक का पूरा एक्सपोजर नहीं जाता, बैंक का रिस्क कम हो जाता है। सेकंड, कस्टमर का अगर अपना पैसा लगा होता है तो उसका दिल भी लगा रहेगा, उसका जो एफर्ट है वो भी लगा रहेगा, ताकि कस्टमर उस बिजनेस को जिसके लिए या फिर उस प्रॉपर्टी जिसके लिए वो लोन ले रहा है उसको डूबने से बचाएगा, क्योंकि उसका हार्ड अर्न्ड मनी जो है उस प्रोजेक्ट में लगा हुआ होता है। यू आर गेटिंग इट? ओके, यस। हाँ, रिस्क वेटेड एसेट टीयर 1 और टीयर 2 को लेके, ठीक है। तो अगर 50% सॉरी 90% एलटीवी हो गया, 80% से ज्यादा, 90% से ऊपर एलटीवी नहीं हो सकता। किसी को 1 करोड़ का घर खरीदना है तो बैंक उसको 90 लाख तक में, 90 लाख नहीं, वहां पे 75 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो 30 लाख तक कोई घर खरीदना चाहता है तो उसको 90% फाइनेंस मिलता है। अगर 80 to 90% आपका एलटीवी है, आपका रिस्क वेट 50%। Above 30 lakhs to 75 lakhs, the LTV could be maximum 80%. If it is 80%, up to 80%, the risk weight will be 35. If it is 75 to 80, it will be 50%. Okay, sorry, above 75 lakhs, it will be 50%. ठीक है, ठीक है। 75 लाख of 30 to 75, 80, 75, it is 75 लाख 75%। अगर 1 करोड़ का 75 लाख के ऊपर कोई लोन है, यानी कि 1 करोड़ का लोन है, तो जो एलटीवी है वो 75%, यानी कि 75 लाख का आपको लोन मिलेगा। 25 लाख आपको अपने जेब से देना पड़ेगा या अपने सेविंग से देना होगा, ठीक है। और ऐसे स्थिति में above 75 lakhs, the risk weight is always 50%। और ये सीआरई, कमर्शियल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में, रेसिडेंशियल हाउसिंग के प्रोजेक्ट में एलटीवी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वो पूरा फंडिंग लेते हैं। और यहाँ पे 75% रिस्क वेट है, ठीक है। चलिए, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह आप बाद में पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटी जो एलटीवी है, 30 लाख 90%, 75 लाख 80%, एबव 75 लाख 75%। आप रिस्क वेटेड एसेट आरडब्ल्यूए को भूल जाइए। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक ए लोन, टेक ए होम लोन। ओके, ओके, आज एमसीक्यू मैंने शो कर दिया, बहुत जल्दबाजी में क्लास लिया था। चलिए, फिर भी नॉलेज के लिए सैंपल क्वेश्चन है, आप नॉलेज गेन करिए। आई हैव नो इश्यूज। लोन्स अप टू रुपीज व्हाट अमाउंट टू एफपीओज which have assured market links at predetermined rates are classified as agriculture farm credit under priority sector lending। पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्रेडिट मैनेजमेंट के सिलेबस में। मे बी मैंने स्किप कर दिया है लिखना, शायद लिखा ही होगा, मगर PSL, without PSL the credit management syllabus is impossible। okay, you cannot imagine this। सर कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें क्या टॉपिक्स इंक्लूड होंगे? इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग इंटरव्यू अप टू फाइनल सिलेक्शन। व्हेन यू सब्सक्राइब टू नॉलेजिस्ट कोर्स, you need not study a single study material outside, ठीक है। और कोई पुख्ता स्टडी मटेरियल ऑनलाइन में अवेलेबल है ही नहीं, एक्सेप्ट नॉलेजिस्ट, नो वेयर इट इज अवेलेबल। यू हैव डाउट्स, टेक आवर सक्सेस स्टोरीज, देख लीजिए पीएनबी में हमारा कितना रिजल्ट है, बाकी किसी का कितना रिजल्ट। अब कोई कोर्स लॉन्च करता है क्योंकि इतने वैकेंसीज है, सबको लोभ होता है, लॉन्च कर ही लेते हैं, उनको लगता है कि स्केल 1 है तो पीओ क्लर्क जैसा ही सिलेबस होगा, मगर सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए दिन एग्जाम होता है, कंडक्ट होता है, उसके रिव्यू देने के लिए या फिर लाइव स्टूडेंट्स के साथ, या फिर जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होता है, फाइनल रिजल्ट, सिर्फ और सिर्फ हम ही आते हैं रिजल्ट अनाउंस कर। 90% सिलेक्टेड स्टूडेंट्स नॉलेजिस्ट से होते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता, बाकी डरते हैं ये, ठीक है। ये है 5 करोड़। व्हाट इज एफपीओ? द राइट आंसर इज 5 करोड़। एफपीओ इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये पूछा जा सकता है। और ये एक फुल फॉर्म भी यहाँ पे भी है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC। ये सब आपको समझना बहुत जरूरी है, आगे जाके इंटरनल क्लास में ये सब हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड? देखिए, ये प्रोफेशनल बैंकिंग है, वहां पे जो सिलेबस में क्रेडिट मैनेजमेंट लिखा नहीं है,
So it could be a professional banking topic as well. That's why I have added general banking in syllabus. So what is also called a zero coupon bond? Trade bill, call money, treasury bill, कमर्शियल पेपर. एसबीआई सीबीओ का बैच लॉन्च्ड है, मॉर्ज्ड क्लास अभी चल रहा है. यू कैन ज्वाइन एनी टाइम. ठीक है, एसबीआई सीबीओ, बीओएम, आरआरबी, ये सारे हमारे फुल ईयर क्लासेस हैं. ठीक है, वेरी गुड. ट्रेजरी बिल्स, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Loans up to what amount to startups as per the Ministry of Commerce and Industry are engaged in agriculture and allied services are eligible to be financed under PSL, Agri Ancillary Services? Tell me. Loans up to what amount to startups engaged in agricultural ancillary services will be categorized as PSL? Yes, बेसल नॉर्म, सरफेसी, ये सब कवर होगा. ये सब कवर होगा. ठीक है, विदाउट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन द सिलेबस और इम्पॉसिबल टू कवर द सिलेबस. अमाउंट बताइए. डी इज द राइट आंसर. ठीक है, 50 crores. पीएसएल क्रेडिट ऑफिसर के कोर्स डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं. निवास आल्सो राइट. एमएसएस एंटरटेनमेंट इज आल्सो राइट. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर पीएसएल, बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी टुवर्ड्स द ऑन लेंडिंग ऑफ टर्म लोन, टर्म लेंडिंग कंपोनेंट अंडर एग्रीकल्चर विल बी अलाउड अप टू रुपीज व्हाट अमाउंट पर बोरोवर? इसमें बताइए, ऑन लेंडिंग एग्रीकल्चर में कितना होगा? चलिए, ये है 10 लाख. 10 lakh is the right answer. Yes, 10 lakh, not 50 lakhs. All loans units in the KVI sector. Please tell me what is the full form of KVI. KVI का full form क्या है, मुझे बताइए. All loan units as per the KVI will be eligible for classification under the sub target of what percentage prescribed for the micro enterprises under the priority sector lending. देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर सकता है. यहाँ पे मैं माइक्रो एंटरप्राइज का जो सब टारगेट है उसके बारे में पूछ रहा हूँ. मे बी फ्रॉम दिस क्वेश्चन दे विल डिराइव द अनदर वन. दे विल आस्क यू द फुल फॉर्म ऑफ केवीआई. ओके, yes, tell me the right answer. It is 7.5. C is the right answer. 7.5. ठीक है, 7.5 will be the right answer. Next question. Okay, Khadi and village industry, the full form of KVI. Maximum number of members under a private company as provided under the Companies Act. How many number of people can be maximum in a private limited company? How many number of member could join the, yes, Khadi and Vikas industry? Khadi and village, not Vikas. Khadi and village, yes. 200. Remember, it's 200. Okay, it's 200. Very good, Meena Taylor. Very good. Document that regulates the management of internal affairs of a company are known as memorandum of association, prospectus, article of association, or certificate of incorporation. Document that regulates the management of internal affairs of a company are called, tell me the right answer. This is called article of association. Very good. Mita and Meena, both of them are giving constantly the right answer. Or Nibas also. An act is said to be ultra vires a company when it is beyond the powers of the company, the directors but not the company, or conferred on the company by the articles of association. Ultra vires, we have read it in our Companies Act session. Companies Act will also be covered, so don't worry, don't panic. Okay, these are the sample questions. You will be surprised to see the level of questions here at Knowledgist or somewhere else. If you have enrolled somewhere else and not finding this kind of content, probably you are at a wrong place. Yes, tell us. No, it is of the company. Okay, ultra vires जो कंपनी के बियॉन्ड है, कंपनी के परव्यू के बाहर है, उसे अल्ट्रा वायर्स के. What is the limitation period for making an appeal against the decision of NCLT? 90 days, 60 days, 7 years, none of the above. And if you understand the question, then tell me where you can appeal against the NCLT. Where can you appeal against the NCLT? Surendra saying D. That means none of the above.
Do you all agree with him? Do you all agree with him? Don't you find an answer in 90, 60 and 7 years? How could you be so dare to answer none of the above? Shubham Asake saying B, 60 days. Nita saying B. But only Surendra has dared to tell it 90 days. Sorry, none of the above, and Meena supporting him. Yes, it is D because it is 30 days. It is 30 days. Okay. And where can you make a complaint or an appeal against the NCLT orders? Where can you make a appeal against the NCLT orders? Where can you do so? Where can you do so? आप कहाँ पे ये कंप्लेन कर सकते हैं? NCLT के खिलाफ आप कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं? Very good, Smita saying 30 days. Yes. Tell me where can you appeal against NCLT? NCLT के खिलाफ आप अपील कहाँ पे कर पाएंगे? 30 days की तो बात हो चुका है, ठीक है? You're telling 30 days, but where will you go against the NCLT? You will go to the National Companies Appellate Law Tribunal. Go to this. Okay? Appellate Law Tribunal. So limitation law, you know that limitation law, that means there is a certain time limit. If you are aggrieved on something, if you are not satisfied on something, feel cheated or someone defrauded you, so you can go to the court anytime. But there is a limitation, because if this happens after 30 years, 40 years of the incidents, if people start going after 30 years, I will in a comfortable position, I will try to file a case against somebody. At that point of time, deciding a case by a court, arranging the evidence is impossible. Okay, so that's why every case has a limitation period based on its category, how we can gather the evidence or not. So in banking, this limitation is very much used, especially in credit, because if your credit somebody defaulted in credit management, you will always have the option to go to the court. Okay, so the limitation law is helpful. So this is how we teach, we read in Knowledgist, and that's why we make the result. Can understand demand loan. Every aspect has its limitation. Okay, but when it is Knowledgist, there is no limitation of learning. Thanking you all again for your love, support, and time. See you in the inside the class. Almost every content provided in the application more than sufficient for you to qualify. Even if you cover 70% of the content provided in Knowledgist application, you will secure a position. You will definitely be selected. Much I can assure. Okay, and for you, the question bank, or famously called top 100 MCQ at Knowledgist, will be the Bible for you. Thanking you all again. दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन. ये एक सैम्पल सेशन ही था. कंप्लीट सेशन और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से. कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, ऑल्सो इन योर एप्लीकेशन एंड इन योर वेबसाइट. So don't hesitate to join from there. Thank you.